ठीक है, रेडी? शुरू से मेरे पीछे पीछे चलिए। सुन 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 सुन, आया हूँ मैं बात कहने, सुन 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 सुन, आया हूँ मैं बात कहने, सुन 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 सुन, फिर से आया हूँ मैं बात कहने, सुन 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 सुन। Youth do not always have voices in national processes, in especially even in the feminist movement, that sometimes they feel that they're not being heard and that they need to actually find spaces where they can come together, talk about the issues that they have, talk about the way that they want to shape the movement. So our goal really has been to not just mobilize youth networks, but also inculcate a sense of ownership, to take charge and find ways to represent ourselves and represent our agendas at different levels and platforms for action. सभी को जिंदाबाद। The idea of this feminist youth leadership program is for people from different intersectionalities, people who face different kinds of marginalization and discrimination, that they will be able to come together, share their ideas. People were working in silos. People were doing education, climate change, tribal welfare. People are talking about health. But how do you actually bring in a feminist lens to all of these movements? And how do you actually build understanding of each of these movements with each other? Have spaces to have these conversations, whether it is about the LGBTQ issues, whether it is about... We started with really finding where these young people lie in the country and the kind of work they are doing in the fields, because that's where the action lies. So now we are taking back all these voices and bringing more voices into our work and expanding beyond the cohort in different regions. This discrimination that I talked about, how many of you are looking for ways to do something about it? Feminist voices of Kashmir are very unique. As unique as they are also very important and often ignored. Mental disorders क्या है, help कैसे चाहिए, rights क्या है, mental health rights क्या है. Oftentimes these spaces are not present, and if they are present, they are very hidden in Kashmir. I have gained new perspectives to look into the problems, and we are the one who can really change things on ground for us. हमारा जो झारखंड है वो बहुत सुदूर है, गांव का जगह है। इनकी बात जो है वो बाहर तक नहीं जा पाती है, जो कहना चाहते हैं। जो आदिवासी महिलाओं का जो बात है उसमें नारीवाद का बात है। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और अधिकार के विषय में बातचीत करना है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को घर से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। उनके साथ जो हिंसा होता है ना, वो घर ही तक रहता है। अगर कोई बोलता है तो उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता है। What is the future of our youths? And if you look up, we do not have leaders to look forward to. Northeast young people's voices or Northeast voices itself don't get much space in those, like the mainstream Indian spaces, etc. Gender fluidity was part of many of our indigenous communities, but the erasure of that in itself is also a very, very big social issue that we have. Northeast, we really don't talk about the caste angle. And with disability, the whole national discourse is different from the whole Northeastern discourse. Okay, I trans community sing we have a masak genders and a masak khang na pa makonstay na la. तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए, नो मैटर हु इज ही और शी। हमारी सोसाइटी में कैसा होता है ना, एजुकेशन में सबसे पहले हमारे सवाल आता है कि लड़का हो कि लड़की हो, कितना पढ़ के करेगी क्या। Even I am a trans woman. Even I am educated, I have faced lots of problems in the society also. There are 21 types of disabilities. Each of them are unique in their own way. Outside world looking at us in a very strange manner makes us feel that we are not part of this society. कोई आता है, मैं मगर फ्लड होता है, तो मैं वो बस्ती में एक बच्चे को, डिसेबल बच्चे को कैसे जाना है, कहाँ से निकालना, इवैक्यूएट करना है, मैं कुछ पता नहीं। We need to ensure that we have cross-cutting lenses of sexuality, of queerness, of disability in any kind of work around gender. And I think if we have young minds like this come together and create collective movements and dialogues, I think the discourse setting and therefore the idea of sustainable development will not be a dream. But ये जो gender है, this is a social construct, ये हमें society देती है, and we have to
address this very identity and we have বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আর একজনের একটা থট আর সেই থটগুলো নিয়ে আমাদের গ্রামে কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় সেটা আমি এখান থেকে আয়ত্ত করতে পারছি। I recognize myself as a feminist and I love to be in spaces where people talk my language. There are very few spaces where we feel safe to put our points out. I think I was looking for like such kind of spaces जहाँ पे इन सारे मुद्दों के ऊपर बात हो, जैसे कि जेंडर है, मेंटल हेल्थ है, कास्ट है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो कि स्टिग्मेटाइज्ड है और जिनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। जो सिर्फ ट्रेनिंग ले लेने से नहीं होगा, हमको धरातल में आना होगा, यूथ को एक यूथ के साथ काम करना होगा, काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना है कि जितने लोग बाहर से आके अपने मुद्दे रखेंगे तो उनकी जो लर्निंग है, जो उन्हें सीखा है, वो बहुत ज़रूरी है और लोगों को सिखाने के लिए। तो ऐसे स्पेस ज़रूरी होते हैं आइडिया शेयरिंग के लिए। यहाँ पे आने के बाद वो पता चला है कि इतने सारे मुद्दे हैं जो जेंडर इक्वालिटी के साथ जुड़े हुए हैं और महिलाओं का सक्षमीकरण करना मतलब देश का सक्षमीकरण और पूरी व्यवस्था का सक्षमीकरण होता है, वो मुझे यहाँ पे आने के बाद पता चला है। Gender at Work India has been an amazing partner on this journey. They have been able to create an inclusive and amazingly iterative process and bringing in a really participatory perspective to the entire thing. स्माइल पास कर सकते हैं हम एक दूसरे के साथ, एक स्माइल पास कर सकते हैं। I think the activities were planned in such a way where we could interact and we could get to know each other in a very short span of time. I really liked how we used all the art to basically depict about so much critical issues, and I found it more beautiful. 1, 2, 1, 2 हमने हंसते खेलते हुए बहुत कुछ चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए सीखने की कोशिश की है। गानों के माध्यम से हमने सीखा, खेल के माध्यम से सीखा और साथ में बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने एक दूसरे से सीखा। कोहोर्ट से एक फैसिलिटेटर की जो जर्नी रही वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी रही। जैसे कि मैं देखता हूँ कि हम बहुत यूथ स्पेसेस पे या कंसल्टेशन में बात करते हैं कि हम सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्रिएट करें या यूथ को आगे आने दें या यूथ को हम लीड लेने दें, उनको डिसीजन लेने दें। तो दैट इज़ द एक्चुअली हैपनिंग हियर। ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देखा है जहाँ पे जो भी पॉलिसी बन रही है उसमें हमारे व्यूज़ को भी सुना गया है और उसको रखा गया है। तो थैंक यू सो मच। You have been very enterprising enough to create your own spaces yourself, and I think those are just the beginnings, and going forward in all forums there will be more young people. भगत सिंह तो सबको चाहिए लेकिन पड़ोसी के घर में। पितृसत्ता मिटेगी तभी जब हम सब एक साथ आके समझेंगे कि वो उसने हमें कैसे जकड़ा है। These are spaces that demand, that force, impose humility onto you. We should be very clear on our own ideology, what we are standing on. I feel like when we're thinking about leadership, everyone I know goes to the government, goes to the UN agencies, goes to all those high-level bodies. But I feel like we forget that we're leaders, change makers, advocates, activists in our own rights, and that has to be leveraged if you want to move forward as a society. जिसको लेकर हम चले थे कि what does it take leadership to reimagine the feminist movement? When we talk about feminist leadership, we talk about collective leadership. We talk about system change. We talk about the politics of the process. The problem is not that we are not speaking, the problem is that you're not listening. And the consultation was one way to ensure that the voices are more amplified. So it isn't just to lead, but to hold hands with the other people and carry forward together. So 100 years from now, inclusivity, I am hopeful that it will feel like something that has been around forever. But we need to remember that that's not the way it always has been, and that's not the way it will stay in the future if we're not careful. So inclusivity right now is at a very dicey stage where it has to set an example for the future, but at the same time, it also has to pay respect to the past. We have to work as a team. बहुत दूर दूৰণিৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰৰ মানুহ ইয়াত মই দেখা পালোঁ। সবে ইংলিছ কয়, হিন্দী কয়, কিন্তু এনেকুৱা ষ্টেপৰ মানুহৰ লগত মই কেতিয়াও মিলা নাই। মই এটা সৰু গাঁৱৰ পৰা আহি ইমান দূৰ আগবাঢ়ি আহি ইহঁতৰ লগত মিলিব পাইছোঁ, মোক বহুত ভাল লাগিছে।
अगर एकता द्वारा सबरको विचार अगर मिलाओ जना दो ने अब हाथ उठोले ते लेकिन ने दोस्त दुनिया बहुत अच्छा सेशन For us to be present here today, it means a lot for us. More than belong, I feel heard and validated, and also I got open to many more perspectives from many communities from across the northeastern part of India. जैसे कि जो भी मैं यहाँ से सीख रही हूँ वो मेरे एरिया में, मेरी जो बस्ती में जो ग्रुप है वहाँ के लड़के और वहाँ के लोगों को वो चीज़ें मैं उन तक डिलीवर करूँ. I would like to imagine a future where people have the access to represent themselves, where people have the voice for themselves to come forward and speak up for themselves. Diversity is the mix, inclusivity is making the mix work. And that's what I want to take away from this entire thing, is how am I co-creating a solution that benefits all, but also still brings in the flavors and the individual aspects of everybody else and their lived reality, so that this co-created space is accessible, affordable to all of them. During all this, while we hope to continue to invest our efforts, our energies, our resource in strengthening this program, I am also very confident and delighted to say that even if Gender at Work tomorrow and UN Women cannot implement this program for some reason, this group itself is so strong that they'll continue to build each other, they'll continue to support each other and draw on each other's strengths, and this will continue to prosper. चलो साथी, चलो रे चलो साथी, हाँ ये मजदूरों का संगठन, ये किसानों का संगठन, ये मजदूरों का संगठन, ये किसानों का संगठन, ये महिलाओं का संगठन, ये युवाओं का संगठन, ये महिलाओं का संगठन, ये युवाओं का संगठन। अरे हम सारे मिलजुल कर बनाएंगे संगठन, ये चलो रे चलो साथी, आएंगे संगठन बनाएंगे, एकता को लाएंगे, चलो रे चलो साथी।